Hello and Assalamu alaikum. This is Saida Sumaira from the platform of University of Spoken English and Computer Sciences. Welcome to USECS Online. Today I am here with a very exciting topic again, and today we are going to learn continuous tense. In my previous videos I have already talked about the present tense, simple present, simple past and simple future. So today we are going to talk about the three categories of continuous tense: present continuous, past continuous and future continuous. And for all the audience who are watching the video for the very first time, let me tell you tense क्या है. So tense उर्दू में जिसको हम कहते हैं ज़माना. और जब भी हम बात करते हैं या हमें टेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें टेंसेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम ये बता सकें कि कोई भी वर्ब या एक्शन या काम जो हम कर रहे हैं वो हम किस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं. क्या हम उसको अभी कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट. क्या हमने उसको गुजरे हुए कल में किया, इट इज़ कंसिडर्ड एज पास्ट. क्या हम उसको आने वाले कल में करेंगे, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज फ्यूचर टेंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट continuous tense, and we are going to discuss three of the categories: present continuous, past continuous and future continuous. And I will try to make you ace these tenses in a very simple way. No complications, no difficult concepts, and if you are going to watch the video till end, so definitely you are going to practice and you are going to learn continuous tense in a very simple way. So let's start. Let's start from the simple present continuous tense. कंटिन्यू वर्ड इसका उर्दू में मतलब होता है जारी, ऐसा काम जो जारी है. अगर वो अभी जारी है इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस. अगर वो काम ऐसा है जो जारी था लेकिन कल था, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कल बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, थी, इट मीन्स कि वो काम जारी तो था लेकिन वो कब था, पास्ट टेंस में था. सो इफ़ इन उर्दू फॉर द बायलिंगुअल स्पीकर्स लेट मी टेल कि अगर सेंटेंस के आखिर में था, थी आता है तो इट इज़ एन इंडिकेशन कि वो पास्ट में बात हो रही है. और अगर मैं कहती हूँ कि मैं कल बोर्ड पर लिखूँगी आने वाले कल में, सो देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी फ्यूचर टेंस, बट लिख रही होंगी it is continuous tense and it is future continuous tense. So let's simplify it. Let's start from the sentence structure SVO. So S stands for subject and subject is always noun or pronoun. If we talk about the verb and the object, it will stay the same in all the tenses, but one thing that is different in all the tenses is the form of the verb. So in yesterday's class we have already practiced like which form of verb we are going to use in simple present, simple past and simple future. That was the first form of verb. So today let's just talk about the sentence structure. So let's start from the simple present tense. Simple present tense में जो form of verb है that is first form of verb. क्योंकि हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस टेंस है, एक काम जो जारी है, सो उसको शो करने के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं ing. ये तो हो गया वर्ब के बारे में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इस वर्ब से पहले एक और चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. एंड हेल्पिंग वर्ब अब प्रेजेंट टेंस में कौन से यूज़ होते हैं? सो द हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज़ इन द प्रेजेंट टेंस दे आर इज़, एम एंड आर. You need to remember this thing. In English there are few things कि जिनका concept होना ज़रूरी है, and then there are few things जिनको हम याद करते हैं. So this is something you need to keep in mind कि helping verb simple present continuous tense में कौन से हैं, is am are, और form of verb कौन सी use हो रही है, first form plus ing. So let's make one sentence. Let's talk about myself, what I'm doing right now. So I can say I am writing on the board. So क्योंकि मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ, I is the subject and that's me. Am is a helping verb. As we talked about the rule कि with the first person we always use am, and then write is an action, it's a verb, बट हम प्रेजेंट टेंस में राइट की कौन सी फॉर्म यूज़ करें हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो ing शोज़ कि वो काम जारी है. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. सो आई होप इट इज़ क्लियर. वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब is am are in present tense along with the first form of verb.
वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर है, अगर तो वो कंटिन्यूस है सो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यही बनेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इन टर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. One thing that differs in three of the tenses is their use of helping verb. Continuous tense में, present में जो helping verb है they are is am are, और past में जो helping verb हम use करते हैं it's was and were. Same goes for the future. Future में helping verb obviously base form plus ing plus will, be, shall, be. All right. Now let's make one sentence in each category, and so that you will get to know, your concept will get clear further. So let's transform the same sentence into the past tense and in the future. जैसे मैंने कहा कि I am writing on the board, कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ. अगर मैं कहती हूँ कि मैं बोर्ड पे लिख रही थी, थी means it's a past tense, तो वहाँ पे helping verb, the whole sentence will stay the same, but it will be I was writing on the board. Full stop. So if you see the difference, I am, it specifies it is present tense with the use of base form plus ing. This helping verb shows it's past tense, and we are using was and were with first form plus ing. I am writing in the present tense. I was writing in the past continuous tense. Now let's transform the same sentence into the future tense. Let's see how we can write it. I and the helping verb, and the helping verb in this sentence we are using is I will be, कि मैं बोर्ड पे लिख रही होंगी. So I will be writing on the board. Now let's take a look at all of the sentences considering their helping verb. First form plus ing, it remains the same. The form of verb in all the continuous tenses, it is first form plus ing. अगर continuous tense है तो present है, past है, future है, verb की first form plus ing ही use होगा. Only thing that is different is the use of helping verb. So in simple present tense, helping verb है is am are. In the simple past tense, helping verbs are was and were, and in simple future, not simple future but the continuous one, we use will be and shall be. Now let's take a look at the sentences. I am writing on the board. I was writing on the board. I will be writing on the board. So this is the major difference, and if you really want to remember how to make correct sentences, you just need to keep this thing in mind, the wise use of helping verb. That's all for today's session. Thank you for your attention and time. See you again with another exciting session. Till then, take care. Allah Hafiz.